Abhishek, aka Red Cart Rana. Welcome back to another vlog. This time I'm traveling to Hyderabad with few of my colleagues of office. Satya, as you know him from previous vlogs. Yup. This is the new one. Tarun. Hi. Prashant is this one. And Puran has been associated with me from past 3 years. But first time he is coming on my vlog. So guys, we are now traveling to Hyderabad. Our flights are booked by our company as this is a business trip. But our purpose is a little bit different. Like few hours of business and more hours of leisure. So let's go into the flight and quickly reach Hyderabad now. अभी हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे और अभी हम पहले थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं उतरने के बाद सीधा सबवे में घुस गए हैं खाने के लिए. वी गोना हैव सम सैंडविचेस हियर एंड देन वी विल टेक आवर कैब एंड देन वी प्रोसीड टू आवर होटल. दैट इज़ द बेस्ट अट्रैक्शन ऑफ आवर ट्रिप. यू विल फाइंड सून. लेट्स गो. Like you could never leave. Do the same, we can't go back. This is all we need. Follow me to make believe and make your dreams come true. This night means forever, and so does me and you. We say we love, we say we love. We gave it all, we gave it all. Until something better came along. सो गाइज हम अभी होटल में आ चुके हैं. हमें जो होटल हमारा दिस इज़ पार्क हयात हैदराबाद द 5 स्टार 1 और ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला बिकॉज हमारी कंपनी ने बुक किया है हमारे लिए स्टे के लिए. तो मैं आपको पहले ज़रा अपना रूम दिखाता हूँ जो हमें रूम मिला. लेट्स गो. So guys, this is our room that we have got at the Park Hyatt. This is our bed and we have got some extra sofas here to sit on, big table here and obviously some cupboards, and I've already unpacked my luggage here. और guys यहाँ पे इतना बड़ा मिरर दिया हुआ है. I guess girls को मेकअप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. So this is the washroom. And here is the bathroom and we have got a bathtub here, so that's a really nice thing to have. I mean obviously they are 5 stars so they will provide these things and we are seriously quite delighted. You may not be able to see that exact expression when I was here the first time. I mean I was like, it was mind blowing. I was like all skies highs at that time and we were just jumping on this bed. You can see in background with me Satya is here. So at the first time when we came here we were just jumping on this bed. और guys यहाँ पे AC कंट्रोल करने का पैनल लगा हुआ है जिससे आप रूम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर बात करें और एमिनिटीज़ की और क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक वार्डरोब मिलेगा जिसके अंदर हमें मिलता है बाथरूम, एक आयरन बोर्ड और यहाँ पे रखी हुई है हमारे लिए आयरन. सो यू कैन आयरन योर क्लोथ्स. और सबसे बढ़िया चीज़ जो मिलती है रूम के अंदर हमें वो है मिनी फ्रिज, जो कि फ़िलहाल तो खाली पड़ा
बट यहाँ पे मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स कैन, वाटर बॉटल्स एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मिल्क तो रखा ही हुआ है. सो दिस इज़ द मिनी फ्रीज़र एंड ऑल्सो यू गेट सम कटलरीज हियर if you want to have a tea, and here you get the kettle and also you have some pouches of for coffee, tea, sugar and milk powder. And if you are a fan of reading books, so here are some books for you to read. And let's see हमें व्यू कैसा मिला इस बार. So हमें एक लॉबी का व्यू मिला जहाँ से हमें दिख रहा है बेकरी काउंटर और एक जाइंट स्टैच्यू जो कि आई थिंक गणेशा आइडल है. ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील है होटल का. एक पीस है यहाँ पे, आपको कोई शोर शराबा नहीं आएगा. बाकी हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल रही हैं इस रूम के साथ वो है फ्री ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही डिलीशियस होने वाला है. वी विल हैव इट इन द मॉर्निंग. और ये सब अगर आप एक्चुअल में खुद बुक करने जाएं तो आपको पड़ेगा 12,000 पर नाइट. एंड इवन आफ्टर मेंबरशिप ये रूम पड़ता है 7,000 का. बट अभी तो हम फ्री में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी ने बुक किया है. सो गाइस ये तो हो गया रूम के बारे में, और बाकी सब क्या है होटल में वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अब. Other than the room, the first thing that I'm gonna show you is the pool of Park Hyatt. The swimming pool of Park Hyatt is a beautifully designed area where you can just plunge into water and have a good time. Other than the swimming pool, hotel offers a 24/7 gymnasium where you can exercise all the time. Now comes the most exciting amenities of this hotel, that is the steam room. You can just sit in the steam room for how long as you want, but there are certain rules that you need to abide. Coming back inside, you can see this is hotel lobby, which is the main and largest part of hotel. Here you can see a giant statue which I think depicts Lord Ganesha. And on the left hand side of this statue you can see a restaurant where we're gonna have our breakfast now. और भी मित्रों तो ब्रेकफास्ट ब्राउन राइस, इडली एंड सांभर. And after having the breakfast, we will just head out towards our office and see you in the next video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज रेड कार्ट राणा. कीप वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग.